Okay. So in the last class, we have discussed about the false cycles, right? And sorry, what is false cycle? You have seen that whenever some delay occurred about that communication message. Communication means you know that some transaction is completing with that particular resource. It will release that, and then it can be used by some another transaction. But what happens? This type of coordination should be done by who? That transaction coordinator. Okay, that site Yes, sir. coordinator. But due to the delay, these messages may not be delivered at the right time, and therefore, in that situation, some false cycles may occur. Okay, then you will see that a false deadlock actually, but that is not actually happening, but only because of that network delay, this false cycle occurs, and this is a very important term, so I suggest that don't forget it. Then unnecessary rollbacks. Unnecessary rollbacks may result when a deadlock has indeed occurred and a victim has been picked, and meanwhile one of the transaction was aborted for reasons unrelated to the deadlock. ठीक है, तो आप लोग सभी को पता है कि रोल बैक का मतलब क्या है. ओके, यू ऑल नो दैट व्हाट इज रोल बैक मीन टू यू व्हेन दैट इज द केस ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है, एक्सिस नहीं हो रहा है तो हम उसको रोल बैक कर देते हैं, वापस इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं, राइट? दैट इज रोल बैक. बट ठीक है, कोई डेडलॉक ऑकर हुआ था, इंडीड डेडलॉक हैज इंडीड ऑकर्ड, एंड डेडलॉक के कारण कोई विक्टिम भी, of course, because of the deadlock there should be some victim, but some transaction was aborted for some other reasons, not for this deadlock. You know that deadlock avoidance techniques है, deadlock detection technique है. Okay, deadlock avoid करने के लिए हम वो रिसोर्स के पास जाते ही नहीं है जो ऑलरेडी बहुत सारे सच शेयर है, राइट? तो यहाँ ऐसा ही हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन को हमने अबॉर्ट किया, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द डेडलॉक कंडीशन, दैट इज फॉर सम अदर रीजन. So for other reasons, that the transaction is rolled back, which was actually not necessary for that reason. So that is known as unnecessary rollback. आ रहा है समझ में? मतलब ये समझ लो कि एक डेडलॉक हुआ था, जिसके कारण एक विक्टिम भी हुआ. ठीक है, अब क्या हो गया कि कोई ट्रांजेक्शन, ठीक है, अबॉर्ट करने से ठीक था कि हाँ डेडलॉक में फंस नहीं जाता हो, बट ये जो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट किया गया है, ये डेडलॉक से रिलेटेड कारण के लिए नहीं, कोई और रीजन के लिए उसको हमने रोल बैक किया जो जरूरी नहीं था. ठीक है, तो इस टाइप के रोल बैक को हम बोलते हैं अननेसेसरी रोल बैक. क्योंकि आपको पता है जब भी हम रोल बैक करते हैं, whenever we go for taking the decision of rollback with respect to transaction, there should be some reason, proper reasons. यहाँ डेडलॉक होने वाली है तो हम रोल बैक कर लेंगे, यहाँ कुछ और चीज मिला नहीं है तो फिर से रोल बैक करके हम वेट करेंगे जब तक लॉक एक्वायर नहीं हो जाए. ठीक है, ये सारे रीजन के लिए हम रोल बैक करते थे. बट व्हेन देयर इज नो सच रीजन, then that type of rollback is known as unnecessary rollback. Why? What is the reason behind this unnecessary rollback? Because of false cycle. क्योंकि false cycle एक wrong concept दे दिया आपको कि यहाँ पे डेडलॉक होने वाले हैं, यहाँ डेडलॉक होने के चांसेस हैं या डेडलॉक है ऑलरेडी. तो उस फॉल्स साइकिल के कारण आप वो उसको सच मान के क्या किया, रोल बैक कर दिया. So this is the reason, this is one of the reasons because of this unnecessary rollback. I mean, this is the one reason you can consider as one reason for which this unnecessary rollback occur. Okay, unnecessary rollbacks can result from false cycles in the global web program. However, likelihood of false cycle is low. False cycle तभी होगा जब आपका network delay occur होगा, right? So that is unnecessary rollback. Now, availability, very important term whenever we are discussing some points related to distributed computing, distributed database. Right? You probably heard this term many times before.
Now, high availability. Availability means you know that yeah, that resource is available at that particular site, so a transaction can be means given that or assigned that resource. That is the availability. मतलब वो अभी अवेलेबल है, वो है अभी, वो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी को हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं, राइट? जैसे आपका सर्वर्स है, बहुत सारे सर्वर्स, सपोज कोई एक पार्टिकुलर साइट से आप डाउनलोड कर रहे हो, if that server is available then only you can go for downloading it, right? तो हम क्या बोलते हैं, हाँ सर्वर अवेलेबल है, वो फाइल अभी सर्वर में है, तो हम उसे डाउनलोड, या तो आप कुछ फाइल को अपलोड करने जा रहे हो उस पर्टिकुलर सर्वर में, if it is available only then you can go for it. Now available term is clear for you. So coming to the high availability, time for which system is not fully usable should be extremely low. अब हम हाई अवेलेबल ये टर्म कब यूज करें? ठीक है, बात यह है कि हम एक सिस्टम को कब हाई अवेलेबल है ऐसा बोलेंगे, जब एक सिस्टम, आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर में ये मिला होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, या तो आप लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पेपर में पढ़ा होगा कि हम प्रोसेसर को आइडल नहीं रखना चाहते, वी डोंट वांट टू कीप आवर प्रोसेसर आइडल. You probably heard that, right? Yes or no? Yes, sir. So that is where this availability term is also related. अगर कोई सिस्टम में आइडियल कंडीशन कम है मतलब बहुत ही ज्यादा कम है, तो हम उसको बोलेंगे हाई अवेलेबल. टाइम फॉर व्हिच सिस्टम इज नॉट फुल्ली यूजेबल शुड बी एक्सट्रीमली लो. मतलब जो वो टाइम, जिस टाइम में वो सिस्टम एकदम ही यूजेबल नहीं है, एकदम ही मतलब अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब ऐसे ही आइडल पड़ा हुआ है, ऐसा टाइम, ये जो टाइम है ये सब बहुत ही ज्यादा कम है, एक्सट्रीमली अगर लो है, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम हाईली अवेलेबल है. हाँ, 100% अवेलेबिलिटी is a kind of impractical things actually, so we can call it as a 99.99% availability. आ गया समझ में आप लोगों को? Yes, sir. जैसे आप लोग सपोज कुछ जैसे कि वैक्सीनेशन के दौरान ही आपने ये सब सिलेक्ट करना पड़ता था और सर्वर से वो टाइम लगते थे, कभी कभी अनअवेलेबल भी दिखा देते थे, सो वी कैन नॉट कॉल दैट एज ए हाईली अवेलेबल सर्वर इन जनरल. बहुत सारे केसेस में, अब आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज सम गवर्नमेंट और व्हाटएवर इट इज, बट आई हैव आल्सो एनकाउंटर्ड दिस प्रॉब्लम्स, that's the poor server, or that means you might also face this type of situation. So you now got it that what is the reason behind it? High availability is not related to that distributed system that you are using. So we cannot call that as a good system, good distributed system, right? तो high availability के बाद जो term है that is known as robustness. ये robustness जो term है बहुत important है. You will also get this term when you go for further higher studies, if you have interest in research or whatever it is related to the higher study, then you should consider this as one of the factor to find out the accuracy of your system. अब robustness मतलब क्या है? कोई मुझे एक simple sentence से बता सकते हैं? Can anybody of you tell me that what does it mean by robustness? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. रोबस्टनेस का मतलब है, आप बहुत सारे मतलब कठिनाई समझते हो ना, हिंदी में वो एक वर्ड है, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है, फिर भी उस कठिनाई में भी आप क्या कर रहे हो, वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो. सपोज यू आर ट्राइंग टू सोल्व अ प्रॉब्लम, but while going for that you may face many difficulties, but still you will be able to solve that problem, then we will call that you have a good robustness with you, right? Now, जैसे कि कोई एक इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, सपोज आई हैव
develop one image segmentation technique. You guys know that I have done my research work in machine learning and computer vision. So that's why I'm citing one example from there, which I personally encountered. Okay. So मैंने एक suppose एक segmentation टेक्निक बनाया है, ठीक है, एल्गोरिथम बनाया है, बट मैं तभी उस segmentation टेक्निक को बोलूंगा कि ये robustness है कब, if that segmentation techniques will be able to segment that image, the targeted image, in spite of a large quantity of noises present in the original image. नॉइस होने के बावजूद भी अगर मेरा जो सेगमेंटेशन टेक्निक है उसने सेगमेंटेशन एक प्रॉपर सेगमेंटेशन करके बता दिया है, तभी मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो इमेज सेगमेंटेशन टेक्निक है वो रोबस्ट है। क्या आप सभी लोगों को अभी रोबस्टनेस का मीनिंग समझ में आ गया इस फ्रॉम दिस एग्जांपल्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. If my voice is not coming, तो तभी बोल देना, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आज। Anyway, बुझी पाला सबे रोबस्टनेस माने की सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो रोबस्टनेस है, दिस इज Yes, रिलेटेड sir. टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। या थैंक यू। तो ये यहाँ क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही साइट है, बहुत सारे साइट होगा। तो एक साइट में सर्वर कुछ प्रॉब्लम आ गया सपोज, इससे पूरा सिस्टम बंद नहीं हो जाना चाहिए। आप वो काम कंटिन्यू कर सकते हो कोई और एक साइट से, तभी हम बोलेंगे कि हाँ यह हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो रोबस्ट है। Means that robustness is the ability of the system to function in spite of failures of the components. Failures are more likely in the large distributed system, क्योंकि वहां पे बहुत सारे sites होंगे। To be robust, a distributed system must detect the failures, reconfigure the system so computation may continue, recovery or reintegration when a site or link is repaired. Then also you should detect the failure. Distinguishing link failure from the site failure is really hard. So you should have multiple links, and multiple failure is like a site failure. तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि आपके पास बहुत सारे साइट्स हैं और बहुत साइट्स में बहुत मल्टीपल लिंक्स आप जनरेट कर सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है। आप उस लिंक में से कोई एक लिंक काम नहीं कर रहा है तो यू कैन डिटेक्ट दैट व्हिच साइट इज एक्चुअली undergoing such type of failure, right? So that's how we go for detecting the failures. Now there is another term, reconfiguration. क्या किसी ने सुना है ये टर्म पहले? What does it mean by reconfiguration? Configuration का हाँ हाँ बोलो। So configuration सुना है? हाँ। Reconfiguration का Reconfiguration, देखो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, एक बार कॉन्फ़िगरेशन किया फिर से रिकॉन्फ़िगर कर रहे हो आप। Okay, so reconfiguration, let's see, about all the transactions that were active at the fail site, making them wait could interfere with other transactions since they may hold lock on the other sites. So in case only some replicas of a data item fail, it may be possible to continue the transaction that had accessed the data at a fail site. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि यू शुड अबाउट ऑल द ट्रांजैक्शन दैट वर एक्टिव एट द फेल साइट। ऑफ कोर्स कोई एक साइट फेल हो गया है, बट वो फेल होने से पहले उसने बहुत सारे ट्रांजैक्शन कंटिन्यू में रखा था, और वो सारे ट्रांजैक्शन कोई कोई डाटा आइटम के ऊपर लॉक यू नो दैट वी हैव डिस्कस दैट, लॉक होल्ड करके रखा था। तो इसीलिए ये बेटर होगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो फेल हो गया फिर भी लॉक जो एक्वायर किया था वो है, तो बिकॉज ऑफ दैट नो अदर ट्रांजैक्शन विल बी एबल टू गेट दोस ग्रैब्स दोस डाटा आइटम्स। सो बेटर क्या होगा कि वो सारे ट्रांजैक्शन जो फेल साइज से एक्टिव हुआ था
उन सबको हम क्या कर देंगे, abort कर देंगे, राइट। abort मतलब क्या पता है ना आप लोगों को, उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, राइट। बुझी पाया सर, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. If replicated data items were failed, means were at failed site, update system catalog to remove them from the list of replicas. Replica, you know that एक डाटा आइटम को हम बहुत सारे साइट में उसके कॉपीज रखते हैं, उसको जिसको कि हम बोलते हैं क्या, रेप्लिकास। अब कुछ रेप्लिका अगर फेल साइट में था, राइट, जो साइट फेल हो गया उसमें कुछ रेप्लिकेस था, तो क्या करेंगे, अपडेट द सिस्टम कैटलॉग टू रिमूव देम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रेप्लिकास, क्योंकि वो साइट ही फेल हो गया है, तो उस रेप्लिकास का क्या मतलब, यू गेट मी ना क्या बोल रहा हूँ। मीन्स आप यहाँ जोरहाट में एक सपोज सर्वर जिसमें कोई एक डाटा आइटम के रेप्लिकास था, अब सपोज दिस site goes means site falls down, then what would happen, is there any meaning of such replicas? So no, we need to reconfigure it, we need to just remove them from the list of replicas. If a failed site was a central server for some subsystem, an election must be held to determine the new server. Right. So if a failed site, so fail ho gaya, that is like a central server for some more subsystem. तो क्या होगा, जो बाकी जो मतलब जो सेंट्रल की तरह काम कर रहा था उसके नीचे कुछ सब सिस्टम्स है, ठीक है। अब ये खराब हो गया है, मतलब खराब हो गया है मतलब वो डाउन हो गया है, सपोज फेल हो गया है, तो इनमें से कोई एक को हम क्या कर लेंगे, विल कंसीडर एज ए सेंट्रल वन। ओके, गॉट इट। Yes, sir. Now, since network partition may not be distinguishable from the site failure, some situations must be avoided. Two or more central servers elected in a distinct partition. No, ऐसा हम नहीं करेंगे, एक ही रखेंगे. More than one partition updates a replicated data item. Updates must be able to continue even if some sites are down. सॉल्यूशन मेजोरिटी बेस्ड अप्रोच, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को याद रखना, मेजोरिटी बेस्ड अप्रोच क्या था, याद होगा ना आप लोगों के पास, आप लोगों ने पढ़ा था मेजोरिटी बेस्ड अप्रोच इन आई थिंक 4 or 5 lectures back I have discussed this majority back. Yes, sir. ओके, तो ये एक सॉल्यूशन मान सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हम जो मेजर मतलब जितने मैक्सिमम साइट्स में n/2+1 साइट्स में जो होगा उसको हम मान के सकते हैं। तो नेटवर्क पार्टीशन जब मतलब हम नेटवर्क पार्टीशन कर रहे हैं तो 2 और मोर सेंट्रल सर्वर को अवॉइड करेंगे, और कोई एक पार्टीशन से अधिक अगर अपडेट कर रहे हैं रेप्लिकेट डाटा आइटम, दैट मे मींस कंफ्यूज, दैट मे raise some conflict, so we will avoid that also. And suppose some sites are down, still this update should be going on, which will reflect the current situation. And for this type of situation, when this type of sites failures are occurring, it is recommended that you go for majority based approach.